उसके सुनने वाले दोस्तों, अब मैं करता हूँ आज नवाज का गीत उस पर भी सुनाया है। Good evening and a very happy new year to you all. This is our first event in the year 2022. We welcome you all to the MSOSA Natak Mandali Zoom Dhamaka. I would like to express my gratitude to Mr. Sundar Hemrajani, President MSOSA, and all of you for your presence and support for this event. When the world went into lockdown, we, on behalf of the Natak Mandali, tried to bring some joy and cheer to our fellow Modernites by organizing online cultural evenings filled with songs, music, and drama. We organized several online evenings, including batch specials, armed forces special, lawyer special, MSOSA president special, teacher specials, and of course, the most popular Modernite specials. All our fellow Modernites are very close to our heart, and it's beautiful to see them reconnect internationally through time and space via this virtual platform. I can personally assure you that a lot of love and hard work has gone into today's program. We hope you enjoy watching it as much as we have enjoyed putting it together for you. Now, without taking up any more of your time, I would like to invite Mr. Sundar Hemrajani, President MSOSA, to share a few words with us. Over to you, Sundar Bhaiya. You're on mute. You're on mute, Sundar Bhaiya. You need to unmute yourself. Okay, thank you, Daksha. Good evening. On behalf of Modern School Old Students Association, that's MSOSA, I would like to welcome everyone who has logged in today. The event is open to all members of the Modern School fraternity, students, teachers, Modernites, their families and friends. Wish you all and your families a happy and healthy 2022. The year that has gone by was difficult in many respects, but it gave us an opportunity to develop the online platform and reach out to our community across the world. The very first MSOSA Online Theatre Festival elicited approximately 5,000 views on YouTube worldwide. In addition, in the short 5-week window in November-December, before Omicron hit us, we were able to organize 3 physical events: Modernites Conclave and Excellence Awards, our annual golf tournament, and Golden Jubilee Reunion Lunch for 1970 and 1971 batches. All of them were successful and appreciated by the participants. Reorganizing the activities was the easy part. The pandemic affected all the school communities. We lost over 80 Modernites, and many teachers and students lost their loved ones. There was distress all around. It was important to empathize with all who were affected. MSOSA volunteers called up the retired teachers to check on their well-being. Funds were raised from the Modernites community in partnership with the Modernites Trust to provide relief to the teachers and the students to support them in their difficult time. MSOSA collected over 25 lakhs for the Guru Pranam program. Already 4 teachers have received the financial support. The recently launched Dare to Dream initiative for Modernites who need financial support to pursue higher education has also received good response.
Associations like ours need to be driven by a higher purpose and should step up to support our communities in difficult times. For more details, please read the MSOSA newsletter, Sandesh, which will reach your mailbox in the next few days. I am grateful to all the Modernites for their unstinted support. Now you can enjoy the Zoom Dhamaka. Thank you. Thank you so much, Sundar Bhaiya. Today, you will witness Modernite performers ranging from the 1966 to the 2021 batch, all excited to share their passions with you. May I now invite Mr. Puneet Raman, Secretary MSOSA, to introduce our first participant. Hi, good evening, friends. Now I wish to introduce Group Captain Sanjay Modgil from the class of 1982. He has successfully retired after a glorious innings of 35 years in the Indian Air Force and is now pursuing his MBA at MDI Gurgaon to learn the nuances of the corporate world. A performer at heart, he croons to win hearts. Today, he will be singing a very popular song, Bhavre Ki Gunjan Hai Mera Dil, from the movie Kal Aaj Aur Kal, originally sung by Kishore Kumar. Over to you, Sanjay. I'm remembering the song. Hope you all like it. भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए. भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए. मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू. मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू. मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू. भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, आहा, तेरे लिए. गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है. गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है. बस इतना समझ ले मेरे हम सफर, तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है. भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए. आहा, Thank you. Wow, thanks a lot for that lovely song. I now introduce Dr. Meenakshi Pahuja from the class of 1995. She is a recipient of the Nari Shakti Puraskar and presently an assistant professor of physical education at the Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi. Carrying on the legacy of her father, she is a national and international medalist swimmer and holds 3 records in the Limca Book of Records. She is also an author and an education expert who has written several research papers in both national and international journals. Today, she will be reciting a poem titled Zindagi.
Thank you. First and foremost, I would like to express my deep gratitude to MSOSA family for giving me this opportunity to be with all of you today. मैं कभी कभी शौकिया थोड़ा लिख लेती हूँ, तो एक छोटी सी कोशिश करी है. And today my title for the poem is जिंदगी. कभी लगता है कुदरत का नायाब तोहफा है जिंदगी, कभी उतार तो कभी चढ़ाव है जिंदगी. कभी लगता है जिंदगी में खुशियों की बहार है, तो कभी लगता है जिंदगी बेकार है. कभी लगता है अपनों में बहुत प्यार है, तो कभी लगता है रिश्तों में सिर्फ दरार है. कभी लगता है सब अपने ही हैं, फिर लगता है इनमें छिपे गद्दार हैं. कभी लगता है कितना खूबसूरत ये संसार है, तो कभी लगता है ये सिर्फ मोह माया का जाल. कभी लगता है जिंदगी सवालों का जंजाल है, तो कभी लगता है जिंदगी एक सरल स्पष्ट जवाब है. कभी लगता है जिंदगी पानी की तरह है, स्वच्छ निर्मल शांति से बहना जानती है, तो कभी लगता है ये तूफानों की तरह है, जो चट्टानों को तोड़कर अपना रास्ता बनाना जानती है. अजीब सी कश्मकश है ये जिंदगी, आज क्या है और पलक झपकते कल क्या हो जाएगी ये जिंदगी. मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है. मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. जिन भी हालातों में जिंदगी ने बार बार जमीन पर गिराया है, उसी जिंदगी ने दोबारा मौका देकर हमें फिर से उठाया है. जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है उसके लिए शुक्रिया अदा करें. थैंक यू वेरी मच. Thank you, wonderful, for that wonderful poem. Now I wish to introduce Miss Maria Javed from the class of 2021. She is a student of Lady Shri Ram College for Women and is passionate about music, literature, art, and poetry. An ardent writer and a melodious singer, she is often debating the finer points of gender equality, gushing over a turn of the century novel, or trying to learn the lyrics of a new song. Today, she will be singing the song Can't Help Falling in Love with You, originally sung by Elvis Presley. Over to you, Maria. We're just trying to get Maria. I'm unable to start her video. Maria, please unmute yourself and start your video. Hi, am I audible? Okay, got you. So I will take just a second, really sorry. The sound is a little low. Yeah, I'm just fixing that. Just give me 1 second. Okay. Maria, we can come back to you. We'll move on. Good evening, everybody. I'm going to introduce Nilansh, Gaur, class of 2005. He is a lawyer by profession and a musician at heart. A young lawyer, he believes that music allows him to connect easily with people. Presenting Nilansh on guitar, crooning to the beautiful song O Sanam. Over to you, Nilansh. Thank you. So I'm going to perform O Sanam by Lucky Ali. I hope I'm audible. Yes, you are. Yeah. Thank you.
So here it goes. Oh, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं सताती हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम, मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। ओ सनम तेरी यादों की कसम, के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना। नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल न जाना। आँखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। ओ सनम तेरे प्यार की कसम, Thank you. It was wonderful. That was just wonderful, Nilansh. I mean, that was beautifully done. If we figured Maria, can we go back to Maria? Yeah, I think we can try it once more. I'd like to call upon Maria again. Yeah, am I audible now? Yes, we can hear you. I'm just Okay. putting you on spotlight. Right. Thank you. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you. Oh, like a river flowing surely to the sea, darling, so we go with some things are meant to be. Take my hands and take my whole life too.
like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Oh, take my hand and take my whole life too. Oh, for I can't help falling in love with you. Oh, I can't help falling in love with you. Thank you. Thank you so much. That was just so beautiful. What a lovely song that was. Moving on, she is an international yoga champion and a Kathak dancer. Saumya Panwar of class 2021. She lives by the motto Script Your Own Saga. Passionate about writing, upcycling, and Vedic astrology. She's preparing for the medical entrance exams as well, and she hopes to discover the science behind consciousness one day. Presenting the beautiful and the most energetic dance on the song Tere Rang.
Truly a talent factory. Thank you so much for that lovely, lovely dance. Now we have Mr. Kamal Sharma, class of 1974. After completing economics honors from St. Stephen's College, he did his MBA from FMS Delhi. He has over 40 years of experience in the FMCG industry and is currently an international business consultant. Today, he's going to sing some old melodious songs from the golden era. Over to you, Bhaiya. Thank you, Pratima. Good evening, everyone. So as Pratima said, I've picked up two songs for this evening. The first of them is from the movie Kala Bazaar, Devanand and Wahida Rahman. And I'm just going to sing two antras from each of these to keep within my time limit. Here goes. The first one. Synchronizing a track is always a challenge on Zoom. I hope it works. Oh ho ho ho, खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। बस्ती भरी हवा जो चली, बस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद
now I move to the next song, which is a song from Deewana. The movie co-starred Raj Kapoor and Saira Bano. Here goes. ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने वो नजाकत दी है। मैं जिसे प्यार से छू लूं वही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मैं गुजरता ही गया तेरी हंसी राहों से, एक तेरे नाम ने क्या क्या मुझे हिम्मत दी है। मेरे दिल को भी जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। Thank you. That was lovely, Raj sir. We now present to you a surprise element of this evening. Honorary Brigadier Dr. Arvind Lal from the class of 1966 is a renowned pathologist, medical administrator, and the chairman and managing director of Dr. Lal Path Labs. He initiated the first public-private partnership in the field of laboratory testing in India. He holds the rank of a brigadier in the Indian Armed Forces, an honorary rank conferred by the Army. The government of India awarded him the 4th highest civilian honor of the Padma Shri in 2009 for his contribution to medicine. Today, Sir will perform some mimicry for us. Over to you, Arvind sir. Thank you, Petra. So my first item is going to be from a very old film, Pahuja, in which Jani Rajkumar enters the compartment of you-know-who. इत्तफाकन मैं आपके कंपार्टमेंट में चला आया था, आपके पांव देखे,
बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीं पे मत उतारिएगा, खुदा हाफिज आपका एक हमसफर. The second one is something which all of you may have already heard many times, but that's the one which I know. And it's about, you'll recognize him, Ajit. हमारे 3 ही शौक हैं, एक मोना, एक सोना और एक मोना के साथ सोना. My third item is slightly more provocative. और भाइयों और बहनों, मेरी आवाज की सुनने वाले दोस्तों, अब आप अपना दिल थाम के बैठिए. मैं आपका अभिनंदन करता हूं. बिनाका गीत माला सन 1961 की हिट परेड पर आज की 32वीं पायदान पे हैं. फिल्म छोटे नवाब का गीत जो पर्दे पे गाया है महमूद ने और आवाज के मोतियों से पिरोया है मोहम्मद रफी साहब ने. इस गाने की फरमाइश करी है झुमरी तलैया से आनंद अकेला और आनंद खत्री, 12 खंबा रोड नई दिल्ली से कुमारी प्रतिमा, दक्षा, जानवी, जयश्री, तनु, रूहानी, मनुश्री और आरती ने. और इन सब ने ये नगमे को समर्पित किया है पटेल नगर के शहंशाह और उभरते कलाकार सुंदर हेमरजानी को. एंड द सॉन्ग गोज लाइक दिस. आम चुम ताम चुम काला बदाम चुम जिम्मा जिमकाला कबड्डी दिन ताला सुल्तान बेग माला आल गली पार गली हु तू 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 देखती में जान गली हु तू तू तू. Thank you very much. So I've got such a big smile on my face, and what a hidden talent. I mean, none of us knew, and what a find this has been. That's what the platform's all about. Thank you so much, sir, for doing this. Moving on, she was part of the team that introduced the Aadhaar card and the Manrega in the country. Suneeta Trivedi, class of 1970, now devotes her time to the various organizations. She is on the board of public sector undertakings and chairperson of many welfare organizations. She's now a full-time golfer. Today, she's reciting the poem Rashmi Rathi by Ramdhari Singh Dinkar. Over to you, ma'am. Thank you. So, dear friends, during this lockdown, I had the occasion to revisit my favorite Hindi author and his epic poem, Rashmi Rathi. It was taught to us in school by our very respected Mr. A.K. Chaturvedi, and the author is Ramdhari Singh Dinkar. The poem is Rashmi Rathi, and it is actually an epic, which is based on Mahabharata, where Karan is the protagonist. Parts 6 and 7 are my favorite, and I would like to recite them because this is the time when everybody is gray. There are no characters which are black and white. Even God is gray. I have memorized this part, and I shall attempt to recite it as fast as I can. In fact, I would like to say here that I got inspired by my little granddaughter, Shambhuvi, who's the latest modernite in our family. And I always hear her recite these long, long poems for inter-school and inter-house competitions. So I wanted to tell her that even the oldest generation has imbibed some talents from the same very school. So this is the time when the wheel of Karan's chariot, it gets stuck in the battleground, and he gets down to pull it out. And Lord Krishna at that time asked Arjun to slay his enemy Karan. So even God compromises with his ethics. So here Arjun is Parth, Karan is Radhe, Krishna is Narochit, Bhishma Pitama is Gange, and Duryodhan is Suyodhan. This is the dialogue now going on between Lord Krishna and Arjun, and then between Lord Krishna and Radhe. Karan.
So it goes like this. Yes, and I also wanted to say, मेरी कविता का शीर्षक है करण का वध. I wanted to get that nostalgic moment also. शरासन तान, बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है. विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे. श्रवण कर विश्व गुरु की देशना ये, विजय के हेतु आतुर ऐशना ये. सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन नरोचित. किंतु क्या ये कर्म होगा, मलिन से नहीं क्या धर्म होगा. हंसे केशव, वृथाहट ठानता है, तू अभी धर्म को क्या जानता है. कहूं जो पाल इसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये. क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही डसेगा. भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा ही चिंतना का भार ढोता. सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके. लगा राधे को शर मारने वे, विपद में शत्रु को संहारने वे. शरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को. विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे निसंभल विरत था. खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रंग देखते थे. नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते. समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा आराम तो लो. फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहन संभालूं. रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर ना सको तो प्राण फिर तुम. नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं. कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम. विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है. भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में. शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा. उपस्थित देखियो न्यायार्थ अरि को. Arjun saw that his enemy was pleading for fairness and justice in front of him. निहारा पार्थ ने हो खिन हरि को, मगर भगवान किंचित बिना डोले. कुपित हो वज्र से ये बात बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले. मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन. हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन धरा था. लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में. सभा में द्रौपदी को खींच लाकर, सुयोधन की उसे दासी बताकर. सुआमा जाति का आदर किया जो, बहुत सत्कार तुम सबने दिया जो. नहीं वे और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था. जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यदि निष्काम जिस दिन. चले बनवास को तब धर्म था ये, शकुनियों का नहीं अब कर्म था ये. अवधि कर पूर्ण लेकिन फिर वे जब फिरे वे, असल में धर्म से ही गिरे थे. शिथिल कर पार्थ किंचित बिना मंतु, न धर्माधर्म में पड़ भीरु बंतु. कड़ाकर वक्ष को शर्म मार इसको, जड़ाशायक तुरंत संहार इसको. हंसा रहा थे, हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या. कृपया कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों. कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर मुझे अपनी चिंता नहीं है. सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं. वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संभल दिया क्या. सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, ना है आज क्या पांडव ही वहां पर. उन्होंने कौन सा अब धर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा. गिनवाऊं क्या, स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं. शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगे का जो आल अर्जुन. नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था. हरे कह दीजिए वह तो धर्म ही था. कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, मगर ये भेद क्यों नहीं खोलते हैं. कुटिल षड्यंत्र से रन में विरत कर, महाबद्रोण को छल से निहत कर.
वतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। और अंत में वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल खुल रहा है, हलाहल से हलाहल खुल रहा है, हलाहल से हलाहल खुल रहा है। धन्यवाद। और and if you feel that yes, I have tried to do some justice to my recitation, then I will feel that I have shown my gratitude towards my alma mater and towards my teachers who taught me Hindi. Thank you. That was just brilliant, Suneeta ma'am, and so powerful. Thank you so much for taking us back to the very, very important message. Moving on, we've got Miss Nijhowne, class of 1970. She was the top 5 finalists in MasterChef India Season 1 on Star Plus, where she was endowed with the title Baking Queen by Akshay Kumar. A food journalist and a trained classical singer, today she brings to us the song This Is My Song by Petula Clark. Over to you, ma'am. Hi, everybody from an Omicron Maries. And since I am an Omicron Maries in the midst of the Corona Dhona, I'd like to make a start with a 2-line punch before I go on to Petula Clark. So hear me through. नाक में सुरसुरी होती है तो दिल सोचता है, नाक में सुरसुरी होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं. So here, I've got it anyway. So here I make a start back to what I'm supposed to be doing. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue? Since the hour I met you, flowers are shining bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Love, this is my song. Here is a song, a serenade to you. The world cannot be wrong if in this world there's you. I care not what the world may say, without your love there is no day. So love, this is my song. Here is a song, a serenade to you. That's it. I take a bow. Thank you so much for suffering me through, because I know my throat's like sawdust and I've dropped decibels, several decibels in my own voice. So I'm making do. Thank you. That was absolutely beautiful, Kandla ma'am. We didn't just tolerate it through, we really enjoyed it. Next up, we have Anvi Arora from the batch of 2021. Currently a student at Shahid Bhagat Singh College, she has been singing since she was 3 years old.
A passionate singer, she has completed her 6th year Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti and her 3rd year from the prestigious Gandharv Mahavidyalaya. She also plays the guitar. Today, she'll be singing a mashup of Saumya and Kun Faya Kun for us. Over to you, Anvi. Hello everyone. Can you hear me nicely? Yeah. All So I have prepared a Sufi number today, Saumya by Kailash Kher followed by Kun Faya Kun. So I'll be starting. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैंने हारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैया सैया रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन, रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन, सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, कतरा अंधेरा तेरी जलती लो, कतरा मिला जो तेरे तन बरसे, ओ मौला मौला, कुन फाया कुन, 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 फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही भाया करूं, फाया कुन कुन फाया कुन, फाया कुन फाया कुन, फाया कुन फाया कुन। Thank you so much. Amazing, Anvi. I think everyone is in awe of your voice now. Thank you. Next up, we have Miss Tara Swaminathan from the class of 1969, a multi-talented modernite who is a singer and composer. She has performed for various charities both in India and overseas. She has also acted in several plays. She will be doing a mimicry for us today. Over to you, Tara. ma'am. A warm hello to all the modernites. While we are aware that Lata ji is in the hospital, we wish her a speedy recovery. On a lighter note, I will attempt to do a mimicry of the legend and Nightingale of India. So here we go.
मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रही। नमस्कार, नमस्कार। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे, कि मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, पर जहाँ संगीत होता है वहाँ तो मैं हमेशा होती हूँ। और आप जानते हो कि अगर मैं होती हूँ तो और किसी की और ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी। वैसे भी मैं आज के संगीत को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ कि आजकल के गाने में सुन के थोड़ा जी घबरा जाता है। और लोग कहते हैं देजा वू होता है, पर मेरे को तो देजा सू होता है। अब वो गाना है ना, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयाँ वे। अब देखिए क्या गाना है। मन जावे ओ मैनू शॉपिंग करा दे, ओ मन जावे मैनू पिक्चर दिखा दे, अपना बना ले। अब ये वर्ड्स थोड़े ऐसे ही हैं। और ऐसे दूसरे और भी गाने हैं, जैसे वो गाना है ना, बेटा जरा स्केल देना ठीक से। जी मैनू यार ना मिले तो मर जावा, आहा आहा आहा, जी मैनू यार ना मिले तो मर जावा। अब देखिए ये गाना तो ठीक है, पर इसमें इमोशन नहीं है। जहाँ मरने की बात होती है तो थोड़ा सा इमोशन दिखाना पड़ता है। अगर मैं इस गाने को गाती तो सुनिए। जी मैनू यार ना मिले, आ जी मैनू यार ना मिले तो मर जावा, मर जावा। अच्छा, अब लोग सोचते हैं कि मैं आइटम नंबर नहीं गा सकती, पर मैं भी टाइम के साथ बदल जाती हूँ। ये वो जो है ना गाना, ये वो दुनिया, ये दुनिया, वो बेबी डॉल का गाना है। अगर मैं गाती तो सुनिए। ये दुनिया पीतल दी, बेबी डॉल में सोने दे, बेबी डॉल सोने दे, ओ दुनिया। अच्छा, तो ये तो हुए ऐसे गाने। अब वो जानते हैं ना आप, अजय और अतुल, वो रगड़ा पैटी जो उनकी जोड़ी बनी हुई है, और वो आए मेरे पास तो उन्होंने मेरे को कहा कि वो चिकनी चमेली वाली गाने। तो मैंने तो जैसे लिरिक्स देखे तो मैं समझ गई कि वो क्या चाहते थे, तो मैं गाना शुरू कर दिया। सुनिए। चिकनी चमेली आई, पौवा चढ़ा के आई, पौवा 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 पौवा। अच्छा, हमारे ज़माने में सिंगर जो होते थे जैसे किशोरदा वगैरह, वो सब तो एक्टर थे और सिंगर भी थे। पर आजकल के ज़माने में तो हर कोने में सिंगर हैं। वो है ना, वो जो उसको क्या कहते हैं, ऑटो ट्यून। सब ऑटो ट्यून लगा लेते हैं और सब गा लेते हैं। अब देखिए वो गाना था सन ऑफ पाए और लाइफ ऑफ सरदार। ओ मेरा मतलब, मैं तो उम्र हो गई ना, थोड़ा भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं। अब देखिए वो गाना था सोनाक्षी सिन्हा का। वो पहली बार ऐसा हुआ कि वॉइस को बॉडी मिली। आप उषा उत्तप जानते हैं ना, पर अल्टीमेटली तो किसी और को चली गई आवाज़। पर वो गाना था ना, रानी तू मैं राजा। अब लोग सोचते हैं मैं नहीं गा सकती, पर उषा उत्तप आप जानते हैं, आपके तो कितने फैंस हैं, दुनिया भर में फैंस पड़े। मैं भी आपकी बड़ी फ़ैन हूँ। तो अगर मैं इस गाने को गाती तो सुनिए कैसा होता। रानी तू मैं राजा जा, ओ पापा पापा पा, ओ रानी तू मैं राजा जा, ओ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है अब आप जान गए हैं कि संगीत की दुनिया में और भी अच्छे लोग आएंगे और गाने वाले लिरिक्स भी अच्छे होंगे। तो इस बार मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। लता जी ने हमारी महफिल में 4 चांद लगा दिए। You were amazing, Tara ma'am. We now have Mr. Vinod Midha from the class of 1970. A theatre enthusiast during school, he graduated from IIT Delhi. He has retired as executive director from BHEL in 2013 and is currently the CEO Atal Incubation Center, EMPI. He'll be doing some shairi for us today. Over to you, sir.
Good evening, everyone. Taking a cue from Kandla, let me start with a disclaimer. मैं तो ना जानू राग कोई बजता कैसे है साज कोई अल्लाह की है आवाज कोई जो मुझको यहाँ पर लाई है दोनों ही तरफ तो हसरत है फिर आलम क्यों रुसवाई है। उर्दू शायरी में पीने पिलाने का मैखाने का जिक्र अक्सर हुआ है। अजीम तरीन शायर मिर्जा गालिब का शेर आप सबको याद होगा, कहाँ मैखाने का दरवाजा, कहाँ मैखाने का दरवाजा और कहाँ वाइज गालिब, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। अब ये कह के चचा तो चल दिए, अब वाइज कश्मकश में है कि अंदर जाऊं कि ना जाऊं। तो अंदर से हमने आवाज लगाई, मैं खाने से न जा वाइज, मैं खाने से न जा वाइज, दरवाजे पे आके हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, एक बार देख तो ले जख्म दिखा के। इसी माहौल के साये में दो तीन छोटी छोटी पेशकश है, पेश खिदमत है, समात फरमाए। मैं खाने में मैं तो अक्सर, मैं खाने में मैं तो अक्सर सुबह जाया करता हूं, जाम सुराही पैमानों से खुलकर बातें करता हूं, सब फुर्सत में होते हैं। मैं खाने में मैं तो अक्सर सुबह जाया करता हूं, जाम सुराही पैमानों से खुलकर बातें करता हूं, एक सयाने पैमाने ने, एक सयाने पैमाने ने जाने किस किस को नाप लिया, कुछ से धोखा, कुछ से नफरत और कुछ से इंसाफ किया, कुछ से धोखा, कुछ से नफरत और कुछ से इंसाफ किया। नाप तोल कर पैमाना सुराही को बतलाता है, कौन जाम में कितनी मैं हो ये उसको समझाता है। और अगर तमन्ना हो तुमको, अगर तमन्ना हो तुमको छलकता जाम उठाने की, पूरी कर लो शर्तें सब मालिक के पैमाने की। If you want a fulfilled life, meet the standards of God's advice. अगर तमन्ना हो तुमको छलकता जाम उठाने की, पूरी कर लो शर्तें सब मालिक के पैमाने की। एक अलग अंदाज में कुछ कहा, कर ली चलने की तैयारी, कर ली चलने की तैयारी, कब आ जाए अपनी बारी, बांध लिया सामान है हमने बोझ गुनाहों का है भारी। कर ली चलने की तैयारी, कब आ जाए अपनी बारी, बांध लिया सामान है हमने बोझ गुनाहों का है भारी। दिल पर कोई बोझ नहीं है, दिल पर कोई बोझ नहीं है, कर ली दोजख की तैयारी। दोजख इज हेल फॉर द वर्स्ट।
दिल पर कोई बोझ नहीं है, कर ली दोजख की तैयारी, दोस्त वहां मिल जाएंगे सब, जमेगी फिर से चौकड़ी सारी। दोस्त वहां मिल जाएंगे सब, जमेगी फिर से चौकड़ी सारी, लेकिन एक अरमान है बाकी, लेकिन एक अरमान है बाकी, जाम पिला दे भर के साकी। लेकिन एक अरमान है बाकी, जाम पिला दे भर के साकी, जन्नत की एक सैर करा दे, फिर दोज़ख में नाम लिखा दे। आखिरी पेश है आज, दोस्तों के बीच है, दोस्तों की हस्ती के ऊपर एक छोटी सी चीज पेश खिदमत है। दोस्तों की अजब हस्ती है, दोस्तों की अजब हस्ती है, पहले जी भर पिलाते हैं, महफिल में खुद चल के आया था, उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों की गजब हस्ती है, पहले जी भर के पिलाते हैं, महफिल में खुद चल के आया था, उठा कर ले जाते हैं। ये तो तय है, ये तो तय है, घर महफूज पहुंचाते हैं, जबरदस्ती हमने पिलाई, बेगम को बताते हैं। ये तो तय है, घर महफूज पहुंचाते हैं, जबरदस्ती हमने पिलाई, बेगम को बताते हैं। अगली सुबह फोन लगा, मासूमियत से समझाते हैं। अगली सुबह फोन लगा, मासूमियत से समझाते हैं, पहले मुझे अपनी बेगम का भैया बनाते हैं। साले उम्र हो गई होश किया कर, उम्र हो गई होश किया कर, दोस्ती अपनी जगह है, लिमिट में पिया कर, दोस्तों की अजब हस्ती है, पहले जी भर पिलाते। आदाब आदाब, शुक्रिया। बहुत खूब विनोद सर, मजा आ गया सुन के। We have Mr. Nilansh Gaur from the class of 2005 back with another song, Chingari. Am I audible? Yes. So the next song that I'm going to perform is Chingari, a beautiful composition by R.D. Burman and Rag Bhairavi. चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हाँ उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, हाँ उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे
कौन मिटाए, हाँ उसे कौन मिटाए। चिंगारी चिंगारी। Thank you. That was so beautiful and heartfelt. Very, very nice. Thank you so much. Miss Kandla Nijhowne from the class of 1970 will present an act, The Odd Laughs. Ruhani, give me a minute. I'm just trying to find Kandla ma'am here. I've sent her the request. Okay. Okay, am I audible? Yes, you are. Well, I've just bought a few firecrackers for everybody to enjoy. And I had to be so careful not to overstep because unfortunately, my bag full of funny ones were all kind of going to be maybe objectionable. So this was like looking for a clean sock in the middle of a dirty clothes ka laundry bag. But well, I found something for you guys, all right. Let me make a beginning. I'm going totally historical, believe me or not. I'm going to be talking to you about Winston Churchill and George Bernard Shaw, two stalwarts, talented people back in Britain in those days, who were illustrious people in their own selves, both of them, but they had a lot of bad vibes in the sense that they were needling each other, there was constant repartees, there was enmity almost, and there was sarcasm galore, which the British, of course, thrived on. So let me come and tell you here about one of these incidents where George Bernard Shaw sends a note to Winston Churchill saying, "Greetings, Winston. I have the opening staging of my new play coming up and on such and such day, and I'm reserving 2 tickets for you. So come along and bring a friend if you have one." And Churchill, you know, they're all razor sharp, these guys, absolutely. So he sends back a little note saying, "George, sorry, old chap, I will not be able to come to the opening of your new play, but I'll come along for the second staging if you have one." So that was the two of them, razor sharp and witty. And I have a similar one coming again next. This is to do with two prime ministers, both of Britain in those very early days. Each of them was, again, as I said, superb intelligence, repartying, rebuttals, disagreement completely with each other. But what used to be happening is that they were always arguing, and their humor and their rebuttals and their repartees became part of almost British history, which is why I said this is like history to me, you know. So what happened here was Disraeli, his accusatory in his way, when he's talking to William Gladstone and saying, "You, my dear friend, are going to die at the gallows, or you are going to die of some unspeakable venereal disease." And what does William Gladstone have to say in reply? He says, "Well, Benjamin, it all really depends whether I embrace your principles or your mistress." So there you are, was the two historicals. And from the two historicals, I'm going hysterical. No, I'm not going hysterical. I'm going to tell you something which is, it's a mainstream idea is hysteria. A lot of you have heard zillions of jokes about 3 guys dying and going to heaven and 3 women dying and going to hell. But this is one more, which I hope you haven't heard. This was pretty original and very different and not from the WhatsApp, trust me. 3 guys have died and gone to heaven. Now, this happens to be 25th of December, Christmas Day, which is why I was reminded of it very recently. It's a very old joke, actually. So what happens is, at the pearly gates, they meet St. Peter's, and St. Peter says, "You're all 3 dead," but that's obvious you're dead, yes. But God up there says, it's such an auspicious day now. Why are we doing this? Why do we have to kill these 3 people? We can send them back, but I have a little rider. Just find out if they're really God-fearing people and what have they got to say about the fact that it's Christmas Day today, you know, Jesus Christ's birthday and all that and all that. So, pata karo, like investigate. So, Saint Peter steps out and says, "You know, you 3 human beings are really fortunate. It's Christmas Day and God is being so kind." He says, "Just prove to Saint Peter that you are God-fearing people who
talk about Christ and Christmas in reverence, reverence. So what have you got on you which proves that you are God-fearing people? What can they possibly have on them? They're dead after all, aren't they? So they kind of go around rummaging, and one guy puts his hand into his pocket, and what does he find out there? He finds a cigarette lighter, but of course he's a chain smoker. So he says, brilliant. He flicks the lighter and up comes a little flame, and he says, silent night, holy night, all is white, all is bright. So St. Peter says, chalega, silent night, you've got a lighter, there's a candle, and that's to do with Christmas. Okay, buddy, God's okay about this one. You can go right back to earth. You've been forgiven, you have a life, and off you go. Second man turns up and says, well, his pocket's something turned out. Let me see what I have in mind, because I can't think of anything else to prove that I'm a God-fearing Christian. So he rummages in his pocket, and what comes out is a bunch of keys. Now, what the hell does a bunch of keys have to do with Christianity and Jesus Christ? But of course, nothing. But he has to make something, jaan bachani hai to kuch karna padega, So he says, well, a bunch of keys. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells. Chalega. So St. Peter says, I think this could go after all. Jingle bells is so much to do with Christmas, even though it's a Santa thing, but it is to do with Jesus Christ. It's Christ's birthday, so jingle bells, chalega. Off you go, back to Mother Earth. You are not dead anymore, mate. You can go. So second guy is gone, and the third guy, of course, now says, I am truly dead. And this is where he's hysterical. I told you I'm moving from history to hysteria. He says, I am like hysterical. I can't think of anything I can do to save myself and get back to earth, because what was I doing? I was making out with my secretary in the car just before I died. So I can't think of anything I can, pull out. But then he only has a pair of pockets and nothing else to go by. So he pulls out from his pockets, and what comes out, even he's surprised, by the way, is a pair of black lacy bikini lowers edged with a red trim of satin. So he says if it can make a sound or come to life, or can jingle bells work or silent night work, and he's just dangling it around. And St. Peter is absolutely furious. He said, you are going to be thrown out with blasphemy. How can you think this is going to work when you're talking about Jesus Christ and Christmas and God Almighty, and you have the gall to pull this out? I'm so furious with you, I'm totally feeling that you should be just put, not just back to earth. There's no question of that at all. Forget it, mate. You need to be put into hell and the fires out there for this horrible, insulting behavior. I am absolutely enraged. So just get on. I'm going to just be signing orders, and off you go. So he said, hold on. I know it's just a pair of panties, but these could be carols. And that's where it ends. I hope you all having a guffaw about this. And that's what the idea was, to invoke laughter. And I'll sign off here. And thank you guys for suffering me through once again. Bye-bye. Thank you, ma'am. That was really fun, and it was a good note to end this evening on. So as we come to the end of this evening, we hope that you indeed walked down the memory lane and relived the school days once more. Amidst the music and performances, I hope you found yourself sitting in Sir Shankarlal Hall once again. We are grateful to our participants, right from the batches of 2021 to 1966, whose collective enthusiasm has made this evening such a grand success. I would like to thank the President, Mr. Sundar Hemrajani, the Secretary, Mr. Puneet Raman, and the hard-working team comprising Daksha, Jedka, Ruhani, Bhasin, and Pratima Mittal, and myself. Thank you all for joining us today. And before we sign out, we also want to inform you that Big Fans has modernized merchandise, and they have a big sale coming up for Republic Day. And I will play the video of that in just a minute. Before signing off, I would also like to tell you about our upcoming events. We will be having the MSOSA Online Theatre Festival 2022. We will be having the 1972 batch reunion. We will also be having a batch gathering for the 2021 batch, the batch that just passed. And with that, I'm just going to play this short video for you all.
Thank you. Good night. Stay healthy and take care.